So student, last class we were discussing about applications of variable motion, variable mass, right? Yes or no? And we have taken one example last class. The example was like, student, let when a jet of right, when a jet of liquid. We did a question on water coming out of a pipe yesterday. Remember, force is equal to Yes, sir. area into density Yes, into velocity ka square. Yes or no? That yes, I'm giving some concepts. When a jet of liquid coming out of a pipe, right, coming out of a pipe strikes a wall normally, strikes a well normally and falls dead, and falls dead. Then force exerted by the jet of the liquid on the wall will be how much, students? Batao. We have already done this one. What is the expression? What was the expression for force? What we derived yesterday? Area, right, into density into velocity ka square. yes, sir. V square. Yes or no? A is area of Yes, sir. the pipe. A is area of cross section of the pipe. A is area of cross section of the pipe, right? And V is velocity of jet, right? V is velocity of jet, and D is density of liquid. Yes or no? This one we have derived. Density of liquid. Twin stop dead मतलब रुक जाता है वहीं पे. अगर वो पीछे की तरफ फिर वापस उतने ही स्पीड पे आता तो क्या होता? फोर्स. देखो ये वाला एग्जांपल जब मैंने आपको बताया था तो देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ से एक बॉडी जा रहा था एम पे, वेलोसिटी वी था, तो वो जाके यहाँ पर चिपक गया, राइट? ये सर नो. और उसने टी टाइम लिया. So if it comes to dead end, then the change in velocity is mv. So the force required will be how much? Rate of change of momentum, मतलब mv by t. Yes or no? है कि Yes, नहीं? sir. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वो स्टॉप डेड हो जा रहा है, लेकिन जब उसी सेम वेलोसिटी पर अगर वो लौट रहा था तो उसी टाइम पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा था? 2mv हो रहा था ना? डू यू रिमेंबर? So in the first class I have discussed about change in momentum. स्नेहा, मनीष, अगर वो उसी सेम स्पीड पे जाके फिर वापस आ जाता है, मतलब एक बॉडी है मास m जो कि v स्पीड में गया, जाके वॉल को टकराया, फिर वापस उसी स्पीड में आ गया, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? 2mv ना? निकाले थे कि नहीं? Yes, sir. अगर मैं 2mv को अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बता दूं तो 2mv by t दैट इज इक्वल टू फोर्स. यस और नो? इन द अबव एग्जांपल, ऊपर वाला ये जो एग्जांपल मैं दिया हूं, इसी एग्जांपल पे अगर उसने ऐड कर दिया कि लिक्विड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, मतलब ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने लिया उसी एग्जांपल पे उसने बोला कि इफ द लिक्विड, राइट, if the liquid bounces back, if the liquid bounces back with the same velocity, bounces back with the same velocity, then the force exerted by the liquid will be how much, students? Then the force exerted by the liquid on the wall will be how much? Double हो जाएगा ना? Yes or no? Change in momentum, that is F is equal to how much? यहाँ पर 2 times of A dv square. Understood or not? ये वाला याद रहेगा कि नहीं? Yes, sir. पहले केस पे, इन द फर्स्ट केस, पानी गया, टकराया और स्टॉप्स डेड, फॉल्स डेड मतलब रुक गया, ठीक है. सेकंड केस पे क्या लिया हमने? सेम स्पीड पे वापस आ रहा, तो ये हो गया फोर्स, है ना? अगर स्टूडेंट अलग फोर्स पे आ रहा होगा, मतलब मैंने और एक केस बता रहा हूं, लाइक दैट इफ द लिक्विड कम्स बैक विद वेलोसिटी v dash, राइट, इफ द लिक्विड comes back with velocity v dash,
comes back with velocity v dash. Students, then what will be the force? ये जो 2adv क्या है, दैट इज adv स्क्वायर जाने का फिर adv स्क्वायर आने का, ये सर नो नेगेटिव साइन को ये करके फाइनल माइनस इनिशियल करके हम 2adv निकाले है कि नहीं, ये सर नो स्टूडेंट्स। तो अगर वो अलग सा स्पीड पे आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन द फोर्स एक्सर्टेड विल बी हाउ मच, चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, राइट। देन द फोर्स एक्सर्टेड, then the force exerted, yes or no, that is F is equal to AdV, yes or no। V स्क्वायर जो था एक के लिए V स्क्वायर हो गया, फिर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ओनली V डैश हो जाएगा, yes or no, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स। वो जो V स्क्वायर था क्या हो जाएगा, वो एक के लिए AdV स्क्वायर हो गया, दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, AdV जाने का फिर आने का V डैश है ना, गेटिंग और नॉट। So just write it, force exerted if it returns with other velocity then it will be F AdV V plus V dash, yes or no। अगर स्टूडेंट उसी पे मैंने फिर अगर एंगल वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, एंगल वाला मतलब ये वाल है, पाइप से जो पानी आ रहा है, लेट ये मेरा नॉर्मल है बट दिस इज द पाइप एक्चुअली इन व्हिच द वाटर इज कमिंग, ये सर नो, ये पाइप है, इस पे जो वाटर आ रहा है, एंड लेट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वाल, ये वाल के साथ थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं, ये सर नो। jet of liquid strikes the wall by making an angle theta with the wall with a velocity v, और v velocity में आ रहा है, करेक्ट, and rebounds with the same velocity, उसी सेम वेलोसिटी पे वो फिर से थीटा एंगल करके रिबाउंड कर जा रहा है, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स। तो जब वर्टिकल के था तो था साथ के था एंगल थीटा, तो उसी टाइम पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा था, डू यू रिमेंबर, 2mv sin थीटा हो रहा था ना, याद है कि नहीं, जब हम ये वाला एंगल लिए थे, जब ये वाला एंगल लिए थे तो क्या हो रहा था, 2mv cos थीटा हो रहा था ना, चेंज इन मोमेंटम, डू यू रिमेंबर और नॉट आयुष, Yes, sir. सूरज, Yes, sir. तो निकाल के देखो, नहीं तो फिर मैंने पहला क्लास में बताया था, जो ये वाल है, दिस इज द वाल, उस पे आके पानी स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं, फोर्स एक्सर्टेड मतलब चेंज इन मोमेंटम, वही वो कहना चाहता है हर कंसेप्ट पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल हाउ मच, 2AdV स्क्वायर, उसका कंपोनेंट क्या ले लेंगे, साइन थीटा, राइट। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड, अगर अगर वाल के साथ एंगल दिया हुआ है, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया होगा तो 2AdV स्क्वायर cos थीटा ले लेंगे, राइट, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट। सी लेट ऐसा दिया हुआ है, राइट, ग्रेवल मतलब जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स है कि नहीं, राइट। इफ ग्रेवल इज ड्रॉप्ड, if gravel is dropped on a conveyor belt, yes or no, at the rate of dm by dt, right, extra force required, extra force required to keep the belt moving, extra force required to keep the belt moving with constant velocity u, with constant velocity u, with constant velocity u, right। स्टूडेंट्स क्या करना होगा, ग्रेवल ड्रॉप्ड ऑन, कौन सी रेट पे मास गिर रहा है, dm by dt है कि नहीं, एंड व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, बट योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट मास इज चेंजिंग ना, तो u इज इक्वल टू f इज इक्वल टू u dm by dt हो जाएगा कि नहीं, यस और नो, गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सी दिस क्वेश्चन, इट्स गिवन a liquid of density rho, liquid की डेंसिटी दिया हुआ है, along a horizontal pipe of uniform cross sectional area a, right, yes or no, with a velocity v दिया हुआ है, थ्रू राइट एंगल बेंड के थ्रू जा रहे हैं, व्हाट फोर्स हैज टू बी एक्सर्टेड एट द बेंड, इस बेंड पे हम कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे टू होल्ड द पाइप इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर अगर फोर्स ज्यादा इसके ऊपर डाला जाएगा तो पानी बेंड होने के बीच वो पाइप को ले जाएगा, पाइप को मुझे इक्विलिब्रियम पे रखना है, ठीक है नहीं, कितना फोर्स मुझे डालना, मतलब हाउ व्हाट फोर्स विल बी एक्सर्टेड, सो दैट मींस ये जो कर्नर है एट दिस कर्नर 90 डिग्री है, मतलब ये कर्नर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, राइट, ये सब नो, इस कर्नर के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, जो वाटर की वेलोसिटी आ रहा है v 45 डिग्री बनाएगा ना, और यहाँ पर भी चले जाएगा जब, दैट विल बी आल्सो 45, यस और नो स्टूडेंट्स, समझ पे आ रहा है कि नहीं।
तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा? वी हैव टू फाइंड व्हाट? चेंज इन मोमेंटम, यस और नो? बेंड में चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है? गेटिंग और नॉट? और शुभम, मनीष? Yes, sir. So we have to find change in momentum. We have to find change in momentum of mass, change in momentum of mass delta m. थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं, डेल्टा m ऑफ लिक्विड, उसी बेंड पे हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। स्टूडेंट्स देखो बेंड पे क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, बताओ। चेंज इन मोमेंटम डीपी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यस सर नो? फाइनल कितना हो रहा है? डेल्टा एम भी वेलोसिटी में जा रहा है, डेल्टा एम लिक्विड जा रहा है, करेक्ट? तो कितना होगा जस्ट बताओ, जस्ट सेम। dp इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, राइट? तो स्टूडेंट कितना हो रहा है यहाँ पर, हम कितना लेंगे, कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? 45 डिग्री ना, यस सर नो? तो 45 मतलब क्या लेंगे हम? cos 45 या sin 45, दोनों एक ही तो है। क्या वैल्यू है इसका? 1/√2 और नॉट, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सो दैट विल बी हाउ मच? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एम वी, डेल्टा एम इंटू मास इंटू वी इंटू cos 45 का क्या वैल्यू ले लेंगे? 1/√2 है ना स्टूडेंट्स, यस सर नो? Yes, sir. तो how much will the change in momentum? √2 times of change in momentum, mass into velocity लिए है कि नहीं? So that is √2 times of, right? Just a minute. √2 times of delta m into v, yes or no? Yes, sir. And force is equal to how much? Rate of change of momentum na, dp by dt or not? So that is equal to √2 times of constant speed पे जा रहा है v, mass is changing dm by dt, right? And dm is equal to how much student? Density is equal to mass is density is equal to mass by volume ना, तो mass is equal to how much? Density into volume, है कि नहीं? और dm is equal to density into volume, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है ना, dl हो जाएगा कि नहीं? लेंथ कैसे चेंज हो रहा है पाइप का, तो dm की बदले में क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी into area of cross section into dl, we can write or not in place of dm, correct? है कि नहीं? so चलो f की जगह पे डाल दो, that is √2 times of v into rho a dl by dt, correct? dl by dt is what? velocity ना, कल मैंने इसको डिराइव किया था, याद आ रहा है कि नहीं? तो कितना हो गया? फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? √2 रो ए वी स्क्वायर। ऐसे भी नॉर्मली हमारा रो ए वी स्क्वायर था ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? और रो ए वी स्क्वायर का हमने क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने जस्ट सी, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था अभी डायरेक्टली, अगर आप ये फॉर्मूला याद तो आप कर पाते ना। ये फॉर्मूला क्या बताया था हमने? देखो 2a dv स्क्वायर साइन थीटा बताए थे कि नहीं स्टूडेंट्स? गेटिंग और नॉट? Yes. तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हमने डाले ना, 2 रो ए वी स्क्वायर साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? √2 रो ए वी आ रहा है कि नहीं? यस सर नो? जस्ट नोट इट, समझ पे आ रहा है ना? impulse, next student give heading impulse, yes or no? Correct. Students, it's a product of impulsive force and time of act, you know. When we put a pin in the wall, we put it with a hammer, yes or no? We give very high amount of force for a very less time. You have observed or not? And someone will give you a slap, he'll give the slap for long time and he will keep near your cheek, but he'll suddenly give you a slap. Which one will be very effective? High amount of force given for very less time, yes or no? Yes, sir. Have you seen the Bahubali Bahubali movie? You have seen or not? They have made a structure like this, you know. The whole army has made a structure like this, and they were coming and putting with a wood. Have you seen this scene? Yes or no? They have No, sir, I have not seen. not seen, to keep quiet. Those who have seen, I am saying.
So they have what they have done, they have put the army like this, yes or no? Means they have made a barrier like this. Have you seen or not? Rest koi dekha hai? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Bring a big amount of logwood and they strike it on here, yes or no? Correct. But very less amount, but they are giving very high amount of force, but for very less time. So that's why they were able to break the protection made by them, yes or no? जो उसने बनाया था इस तरह, ठीक है? So that type of force is known as impulsive force. Yes or no? So impulse means, right, it is the product of, right, it is the product of right, it is the product of impulsive force. It is the product of impulsive force and time of action that produces a finite change in momentum, that produces a finite change in momentum, right, of body. Yes or no? That means, students, force is equal to rate of change of momentum, na? Yes or no? That is mv minus mu by t, right? If I multiply force into time, then what I will get? mv minus mu, na? So that means rate of change of momentum is impulse. Yes or no, students? So the symbol of impulse is J. J is equal to force into time. That is equal to m whole into v minus u. That is also change in momentum. That is what? Change in momentum. What will be its unit, Ira? What will be the SI unit of moment of impulse? Sir, it is the Newton per meter, Newton meter per second. Newton meter per second. Second square, sir. So force to Newton Newton. second. Force is Newton. Time No, is sir. Newton second, sir. it is only Newton second. Yes or no? If you will see in this format, then you can also write that is also kg meter per second. Yes or no? Mass is kg and velocity is meter per second, right? And what will be its dimension formula? Mass is m, velocity is l, t to the power minus 1, right? This is the dimension formula. Hai ki nahi? And momentum is a vector quantity, students, right? It's a vector. It's a vector directed along the force. It's a vector directed along the force. Correct. Change in momentum and impulse are always in same direction. Just remember, yes or no? That means change in momentum. Change in momentum is impulse or not? So change in momentum and impulse are always in the same direction. Are always in the same direction. Right? Yes or no? And for constant force, students, for constant force, J is equal to Ft. But if variable force, if force is vary, impulsive force अगर variable है, मतलब टाइम के साथ फोर्स चेंज करता जा रहा है, so force is equal to, we know what, dp by dt, right? And J will be equal to how much? Integration of t1 to t2 कैसे vary कर रहा है into f dt, right? Yes or no? This could be the impulse for variable force. And force, if I will draw the area graph between force and time, अगर मैंने force and time के बीच में कोई भी एक ग्राफ बनाया, कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है कि नहीं, let t1 time and this is t2 time, और मैंने जो force दिया, let that is f, right? So how to find impulse? The area under the force time graph will give me what? Impulse, na? And that is change in momentum, yes or no? So the area bounded, right? The area bounded by
the force time graph, the area bounded by force time graph measures impulse, right? Yes or no? ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट मैं बताता हूँ एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, कुछ एग्जांपल्स। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, राइट? जो एग्जांपल हमने पहले अपने स्कूल लेवल में भी पढ़े थे, स्टूडेंट व्हीकल में जो शॉक ऑब्जर्वर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि शॉक ऊपर तक पहुंचने तक थोड़ा सा टाइम वो वहां पर स्पेंड हो जाएगा, तो पूरा चार्ज ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, है कि नहीं? तो इम्पल्सिव फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं? नंबर वन, राइट? शॉक ऑब्जर्वर्स are used in vehicles to reduce the magnitude of impulsive force, to reduce the magnitude of impulsive force। ठीक है स्टूडेंट, क्रिकेट जो क्रिकेटर है वो हाथ को नीचे की तरफ क्यों करते हैं, अपने हाथ को क्यों लोअर करते हैं? क्योंकि जब वो कैच पकड़ते हैं इम्पल्सिव फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, मतलब अगर टाइम को हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है ना, राइट? ए क्रिकेटर lowers his hands while catching the ball, while catching the ball to reduce the impulsive force, to reduce the impulsive force, right? Just right, students? फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द इम्पल्स ड्यू टू द फोर्स। हमें इम्पल्स निकालना है, फोर्स जो दिया हुआ है दैट इज गिवन ए आई कैफ प्लस बी इंटू टी जे कैफ, यस सर नो? एंड ए का वैल्यू जो है दैट इज 2 न्यूटन एंड बी का जो वैल्यू है दैट इज 4 न्यूटन सेकंड इनवर्स, राइट? एंड अगर फोर्स एक्ट करता है टी इनिशियल इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी फाइनल इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, तो हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स? इम्पल्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड? इम्पल्स हमें निकालना होगा, तो सिंपल है कि नहीं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स? जे इज इक्वल टू क्या बताया मैंने अभी? एफ डी टी टी वन टू टी टू, ये सर नो? दैट इज इक्वल टू ए आई कैफ प्लस बी टी जे कैफ होल इंटू डी टी लिमिट 0 to 0.3, है ना? Yes sir. So that is J is equal to how much? A 0 to 0.3, that is A तो बाहर आ गया and B का वैल्यू, A का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 0 to 0.3, चलो डी टी आई कैप लिख देता, राइट? बाद में B का वैल्यू डाल देंगे, प्लस B को बाहर ले आया, अंदर में एक T था, T डी टी जे कैप, राइट? ये सर नो? सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिमिट 0 to 0.3, dt का इंटीग्रेशन क्या है? T है ना, तो हमने A लिख दिए, dt का T 0 to 0.3 प्लस B इंटू टी स्क्वायर बाई 2 0 to 0.3, यहाँ पर J कैप, यहाँ पर I कैप, राइट? ये सर नो? अभिनव गेटिंग ना? सो A की जगह पे 2 डाल दिए, यहाँ Yes, sir, पर getting. 3 डाल दिए, I कैप था रख दिए, प्लस B की जगह पे B इंटू टी स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर बाई 2 J कैप, तो पूरा सॉल्व कर देंगे तो 0.6 I कैप प्लस 3 3 जा 9, 9 डिवाइड बाई 2, है कि नहीं? तो दैट इज 18। B का वैल्यू कितना है? B वैल्यू इज 4, है ना? 36 by 2 18, 0.18 J of Newton second. Got it? Take example. Let's take another example, students.
Students, a bullet is fired from a gun, है कि नहीं? And the force on the bullet, है कि नहीं? Right, a bullet is fired. A bullet is fired from a gun, right? The force on bullet is F is equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5t, ऐसा दिया हुआ है, this much Newton, right? The force reduces to zero. The force reduces to zero just when the bullet leaves the barrel. Just when the bullet leaves the barrel. ठीक है. Find the impulse imparted to the bullet. Find the impulse imparted to the bullet, right? Student, find the impulse imparted to the bullet, है ना? तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? Bullet is fired from the force. तो force कितना दिया? This much is the force. The force reduces to zero, है कि नहीं? Just when the bullet leaves the barrel. Find the impulse imparted. है कि नहीं students? तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम बताएं तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, इफ आई विल बी सेइंग अबाउट फोर्स, सो एफ इज इक्वल टू 600 माइनस 2 into 10 to the 5t, इस तरह वो वेरी कर रहा है फोर्स, है ना? दिस मच न्यूटन. स्टूडेंट्स, ये जीरो कितने टाइम के बाद होगा? दैट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड ना. कितने टाइम के बाद फोर्स जीरो हो जाएगा? तो दैट मींस जीरो इज इक्वल टू 600 माइनस 2 into 10 to the 5t. ऐसे सॉल्व करके हमें कितना मिल जाएगा? 600 इज इक्वल टू 2 into 10 to the 5t, राइट? तो t is equal to how much? 3 10 to the power minus 3. 3 into 10 to the minus 3 second. समझ पे आ रहा है ना स्टूडेंट्स? This much time it will take to the force to become zero, है ना? तो अगर हम impulse की बात करेंगे तो impulse is equal to how much? Integration of f dt 0 to t, right? So that is equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5t, है ना? dt, that is 0 to t, है ना? Yes or no? So that is equal to, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 600t हो जाएगा, ये 600 dt का t है, माइनस 2 into 10 to the 5 को रख दिए, एंड दिस विल बी t स्क्वायर बाय 2, राइट? और लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे? 0 to 3 into 10 to the minus 3, है ना? यस सर नो? तो चलो डाल देते हैं 600 into t के जगह में 3 into 10 to the minus 3. ये जीरो है ना, तो वो वाला पार्ट लिखने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट 2 into 10 to the 5 into बाय 2 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर मतलब 9 into 10 to the minus 6 by 2, 2 कैंसिल, राइट? तो पूरा सॉल्व करने के बाद 300, तो दैट इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन सेकेंड. दिस इज द impulse imparted. Understood? This was for today.